and welcome to our show Nari to Narayani, presented by Inspiring Indian Women on MATV. Today's topic is Women's Beyond Boundaries, and we have two beautiful guests today. One is Zamiha Desai and other one is Varsha Vavishi, two beautiful ladies with us. So let's start with Zamiha. Hello Zamiha, welcome to our show. Thank you. Tell me more about yourself first. Oh gosh, in a nutshell, I'm Zamiha Desai. I founded a couple of Facebook groups in 2017. One is called Professional Asian, and it's for your Asian lifestyle, and one is called Recommendation, that's for women. And it's become a big, very vibrant, happy community to share things about your lifestyle with. From that, we launched Hey Gorgeous, which is a shopping and lifestyle event in Harrow, and recently we've launched a magazine as well, which is called Luxurist, and that is for, again, Asian lifestyle in the Western world. वर्षा जी, आप अपने बारे में हमें विस्तार से बताएं. पहले तो ये कि thank you for inviting me to actually promote Nari Shakti, because that's what I believe in. मैं ज़्यादातर voluntary काम करती हूँ, क्योंकि I believe कि हम सब में कोई शक्ति है जो हम यूज़ नहीं करते. So अच्छा होता है कि हम सब एक दूसरे को प्रमोट करें, encourage करें और community का कुछ पार्ट बने. So ज़्यादातर I mean that's what I prefer, कि we volunteer for organizations and come out of isolation. आप जो है डिसेबल बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं, काफ़ी कुछ कर रही हैं, वुमेंस बेबी एशियन वुमेंस के लिए भी काफ़ी कुछ कर रही हैं, उसके बारे में भी हमें विस्तार से बताएं. So UK Asian Women's Club was formed in 1977. That's in North Harrow branch. It started with people migrating or actually kicked out of Uganda. So जो ladies थी वो actually सबको, सारी फैमिली को शौक लगा था कि हमें एक नए देश में जाना है, नए देश में जाके हमें सेटल होना है. सब कुछ पीछे छोड़ के आए थे, कुछ भी नहीं था उनके पास. बिना से कुछ भी, यानी किसी में 2 पैसे भी नहीं थे पॉकेट में. तो यहाँ आने के बाद उन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, और स्ट्रगल के साथ डिप्रेशन भी आया, आइसोलेशन भी आ गया, लैंग्वेज नहीं आती है, और यहाँ लोग तुम्हें देखते हैं क्योंकि तुमने बिंदी लगाई है, तुमने साड़ी पहनी है. तो देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन. तो हमारे यहाँ एक हंसाबेन करके थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट करना चाहिए. सो मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट करने के बाद हमारी नॉर्थ लंदन की ब्रांच बहुत आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे पता चला कि लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती है, तो ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी. तो ट्रांसलेशन के लिए 23 लैंग्वेजेस की उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए, और उसमें सारे यहाँ के जो रेफ्यूजीज़ भी थे उस वक्त के, वो इंटरप्रेटिंग करते थे. तो इसके बाद डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, स्कूल में जाना है, लैंग्वेज नहीं है. तो इतना अच्छा हुआ कि ये इंटरप्रेटिंग एंड ट्रांसलेशन होने के बाद हैरो काउंसिल को भी रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है. तो उसके बाद जैसे टाइम बीतता गया, ये जो UK एशियन वुमेंस क्लब है वो बढ़ती गई. आज हमें 300 लाइव मेंबर्स है, यानी रजिस्टर हुए. 200 एंड प्लस मुझे लगता है कि वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से वी कांट टेक मोर पीपल, और जगह भी इतनी बड़ी नहीं है, और हम सब वॉलंटियर्स हैं. तो होता है कि चलो वीमेन को प्रमोट करें, वीमेन बाहर निकले अपने आइसोलेशन से. और बात रही लर्निंग डिसेबल की, वो तो मेरा पैशन है कि टू वर्क विद एडल्ट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, उनको प्रमोट करना, कम्युनिटी में प्रमोट करना, और उन्हें वो जहाँ भी जाए उनको रिकग्निशन मिलना चाहिए. कि हम लोग कहते थे कि ये डिसेबल है, तो मैं तो मानती हूँ कि हम सब कुछ न कुछ बात में डिसेबल तो है, हम लोग भी परफेक्ट नहीं हैं. तो उनकी जो जो इच्छाएं हैं, उन्हें जहाँ जाना है, कम्युनिटी में उनको रिकग्निशन नहीं मिलता है, तो आई प्रीफर कि भाई उन्हें भी हम प्रमोट करें. जी, Zamiha, you have a huge group online. I mean, so when you realize that I have to do something for Asian community? Oh gosh, I think we have like Varshaben and I have a different generation. So when my parents, for example, and when a lot of the parents settled in the UK, then
people like you were, obviously instrumental in raising their awareness, raising their profile, raising the help that they needed, and then our generation, born and brought up here, we had a whole different set of problems, and so we knew the language, we integrated into society, but actually we started probably losing a little bit of our heritage and our culture. So while your generation wanted to wear saris and bindis and everything, some of our generation didn't know where to get like sari blouses made, or where to buy stuff that was modern and relevant to our age group and our generation. And I think that's when I started, because I actually can't put my own sari on to this day. I'm not proud of it, but luckily my mum was always there to help, or somebody in the community that was older that knew how to put a sari on. But I think this started because somebody recommended me a sari pleater. You can get it on Amazon at that time, and it actually really changed my life in a small but really useful way. It just meant that I didn't have to go to my mum's house. I was a bit more self-sufficient, and I just thought there's a lot of Asian women that were born in this country probably had the same issues as me. I didn't know where to buy a nice sari blouse from. Like, I love my mum, she's probably watching, but she does kind of have a little bit of that old-fashioned taste in sari blouses. So the neckline is up to here and the sleeves are down to here, and it's functional and lovely. But I go to these events and there'd be people with like one shoulder sari blouses and crisscross at the back, and something a little bit different and more modern, and I didn't know where to find a tailor that would do that. So I think this group online was very important, because women could ask each other questions. It's all about supporting each other, and peer review, peer help. Where do you go for this? Where do you go for that? And so recommending other businesses also really helped the South Asian small business economy and entrepreneurs, as well as being able to reach out to things that we wanted for our generation. And then also we started another group, Mini Asian, which Ronnie runs, and that is to help us parent effectively as well with the kind of traditional and cultural things that we need to do. वर्षा जी, जैसे ज़मीन जी ने हमें बताया कि साड़ी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है. आपने जैसे कहा कि बिंदी लगा कर निकलो या कुछ पहन कर निकलो तो लोग नोटिस करते हैं उस चीज़ को. आपको क्या अंतर लगता है जब आप यहाँ आई थी और अब में, मीन्स काफ़ी टाइम आपने यहाँ पे स्पेंड किया, तो जो लोगों की नज़र होती थी, जैसे पहले आपको जिस तरीके से नज़रिए से आपको देखते थे, और अब में आप क्या फील महसूस करती हैं? मुझे लगता है कि थोड़ा तुम्हारे में लैंग्वेज का पावर हो ना, तो इट बिकम्स ईजियर. तो मैं जब आई, इसको 52 साल हो गए अभी तो, लेकिन तब कॉन्फिडेंस में मुझे पहले से ही था. पता नहीं क्यों, बड़ी सिटी में बड़ी हुई, मैं मुंबई से हूँ, तो पहले से कॉन्फिडेंस तो बहुत था. तो जब पहली बार इंटरव्यू देने गई तब मुझे लगता है कि शायद मेरी इंग्लिश नहीं समझ में आई होगी उन्हें, लेकिन मुझे जॉब मिल गया. जैसे जॉब मिला तो मुझे इतनी कॉन्फिडेंस आ गई, मैंने कहा मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ. तो जॉब मिलना उस वक्त 72-75 तक की मैं बात करती हूँ, बहुत इजी था. लेकिन हाँ, आगे बढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो एशियन है या इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो थोड़ी, लेकिन थोड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन था वो तो अब भी है. मुझे लगता है कि यहाँ भी आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए और एशियन वुमेन के लिए, थोड़ी चैलेंज तो है टॉप पर पहुँचने के लिए. लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो मेरे प्रॉब्लम से सिमिलर है, क्योंकि हम जब आए तब लैंग्वेज नहीं थी, खाना भी बिल्कुल अलग था. तब जैसे यहाँ गोभी और मटर मिलते थे और कुछ तो मिलता नहीं था, तो खाने में भी हमें बहुत मुश्किल हुई थी. लेकिन एक दूसरे के साथ मिलके उन्होंने जो किया है, हेड्स ऑफ टू वीमेन. मुझे लगता है कि वीमेन जैसे कोई किसी के पास पावर ही नहीं है, क्योंकि आज नारी शक्ति, नारी शक्ति तो मैंने हर जगह देखी है. मैं एक्चुअली कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि 35 थी जब
हम लोग न्यूजीलैंड गए थे रहने के लिए, तो तब मैं 35 थी, लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त प्रेसिडेंट बनाया वेलिंगटन में। तो आई थिंक हमारा में कुछ है ऐसी शक्ति कि जो हम खुद नहीं जानते। इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा मैं कहती हूँ कि यस यू कैन डू इट, क्यों नहीं कर सकते। तो एक चीज़ ऐसी है कि प्रमोट करना एक दूसरे को, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और क्योंकि पैसे दो तीन चार फैमिली इतने छोटे घर में, कोई ने बेनिफिट तो ली नहीं थी, तो साथ में रहते थे। साथ में रह के जैसे जैसे पैसे हुए वो अपने अपने घर में चले गए, लेकिन जो क्लोजनेस था वो अब भी मुझे वो फैमिली में अब दिखता है कि नहीं, वो अब भी अपने बच्चों के साथ है, साथ साथ रहते हैं। लेकिन नारी शक्ति की तो क्या बात करूँ, ये यूके एशियन वीमेंस क्लब इतना आगे बढ़ा। जैसे मैं 10 साल से मैं वहाँ प्रेसिडेंट हूँ, और हर वक्त आपको कुछ ना कुछ नया आपके मेंबर्स के पास से सीखने को मिलता है। और मैं तो कहती हूँ कि हर नारी में टैलेंट है, उन्हें बाहर निकालना हमारा काम है। एक दूसरों को थोड़ा प्रमोट करो, एनकरेज करो, जैसे आपने किया है यहाँ, आपने नारी के लिए जो किया है, हेड्स ऑफ टू यू। एंड हेड्स ऑफ टू, इट इज प्रेजेंटेड बाय इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन। यस, इंस्पायरिंग इंडियन विमेन के लिए है। एंड आई एम सो ग्लैड टू बी हियर कि भाई हम एक दूसरे को प्रमोट करें, क्योंकि नारी शक्ति है ही ऐसी। जी बिल्कुल। Zamia, how your team members promote each other, or you promote each other in your team? Oh, my team members actually, they're very modest. Well, we do some stuff on Instagram, and we use social media a lot to talk about each other. Some of them have got their own businesses and they talk about that. But women should always uplift one another, and I think it's a little bit different for us because I think we feel like we're serving the community. We're there to help and to encourage other women, and I think with the community it's really important that this recommendation or professional Asian, it's not about me, it's not about, you know, Ronnie or Rena or Seema or Renu or Aarti or any of the team. It's about everybody helping each other to get to a better place. So we don't kind of do the promotion stuff, but we kind of tend to be in the background and helping each other out, and all the team are very hands-on. Yeah. How they can reach out you? Is there any Facebook link or something they can So recommendation is the women's group that's on Facebook, and so if you look under groups you'll see that, and you will be able to request to join if you're a woman. Professional Asian, same thing, it's a Facebook group. I think we're at almost 94,000 members now. So again, you can just click the link in the group section on Facebook and join that one. And then we're on Instagram as well, so you can always DM us at Recommendation and Professional Asian, or the new magazine Luxurist is up there, and Hey Gorgeous, which I run with Apesh with a lot of Natasha's help. They are also on Instagram. So we do tend to be on social media, and our offices are in Northwood, so you can always come in and say hello and have coffee with us. Okay. वर्षा जी, अगर कोई आपसे मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे, अपने आप को आपसे कनेक्ट करना चाहे, तो वो कैसे आपसे रीच आउट कर सकते हैं? आप इनकी बात सुन के मुझे अब एक्चुअली जो एज गैप है पता चला। हमारे वक्त ये नहीं था, सोशल मीडिया नहीं, सो हम लोग अभी भी सोशल मीडिया में नहीं है। वन रीज़न कि जो हमारे मेंबर्स है वो ज़्यादातर 65 से 97 तक है, उन्हें शायद वो चलाना भी नहीं आता, चलाना भी नहीं आता। और जब वो वीडियो होते हैं ना, अकेले हो जाते हैं ना, तब उन्हें कोई मेल कांटेक्ट में नहीं आना है कि चलो साथ में हमने कोई प्रोग्राम किया, जब मेन भी आ जाए। सो वी रिस्पेक्ट their age, their disability, क्योंकि lot of them have medical condition. I mean, as you get older, diabetes, heart condition, or you have knee replacement. So we do look after them. लेकिन मुझे ये पता चला कि हमारे वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फ़ोन था। सो फ़ोन से एक दूसरे को बताना, और सब्जी लेने जाना है तो साथ में जाना, ग्रोसरी करनी है तो चलो साथ में चलते हैं, क्योंकि
अकेलापन बहुत था, डिप्रेशन बहुत था, मेंटल हेल्थ तो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि किससे बात करें, नेबर तो अंग्रेज है, वो तो समझने वाले नहीं है, और बच्चों जब स्कूल में बच्चे जाते थे तो वहाँ भी इंग्लिश है, तो जो सोशल स्टिग्मा था उनके लिए, उनको बाहर लाने के लिए बहुत काम करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये नारी शक्ति ने किया है हमारे में, हम सब विमेन जो है उनमें एक है कि चल मैं भी आती हूँ तेरे साथ, और कहीं जाना है तो साथ में जाना, शॉपिंग करनी है, वेमली आना है तो साथ में आना, तो ये साथ साथ करना, वो थोड़ा आइसोलेशन थोड़ा उनका कम हुआ। और आज भी मैं देखती हूँ कि जब कोई अकेला हो जाता है, पार्टनर को लूज करता है, तो उनमें आइसोलेशन बहुत आ जाता है और डिप्रेशन भी आ जाता है। तो जब वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, एक पहली बार उन्हें लगता है कि लोग कहेंगे कि मैं तो अकेली हो गई, लेकिन यूके एशियन वीमेन में एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे सारे मेंबर्स और जो कमेटी है वो सारी वॉलंटरी है, तो हम उन्हें बहुत दिल से आराम से उन्हें वेलकम करते हैं, उनका हम ख्याल रखते हैं, जो डिसेबल है उनका तो हम स्पेशली ख्याल करते हैं, क्योंकि हम भी वहाँ पहुँचने वाले एक दिन, तो हम यही देखते हैं कि आज हमें ज़रूरत है उनकी देखभाल करना, शायद बच्चे काम करते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन साथ में नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे को हेल्प करें, और उसमें भी स्पेशली वॉलंटियर होना। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं टॉकिंग न्यूज़पेपर में जाती हूँ, जो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और बंगाली 4 लैंग्वेज में ब्लाइंड लोगों के लिए न्यूज़पेपर रिकॉर्ड करते हैं। तो हम नीस्टन स्टूडियो है, ऐसा हुआ कि मैं जिम में थी, ट्रेडमिल में काम चल रही थी, और किसी मेरे नेबर, मेरे नेक्स्ट जो था, उसने मुझे कहा अच्छा तू गुजराती बोलती है? मैंने कहा मैं गुजराती हूँ। तो बोलती अच्छा आपको वॉलंटियर होना है? मैंने कहा कहाँ। जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसको पीछे देखकर नहीं देखा, मैं करती ही रही। आज मुझे वहाँ 15-17 साल हो गए। तो टॉकिंग न्यूज़पेपर्स में भी हम वॉलंटियर्स रिक्रूट करते हैं, मैंने भी बहुत खूब रिक्रूट किया है, और बंगाली में भी हमें ज़रूरत है। तो होता है ना कि वॉलंटियर होने के बाद मुझे क्या मिला, मैं सच में बताऊं, उसके बाद जो तुम्हें लगता है कि आई कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कम्युनिटी, टू द सोसाइटी, अच्छा लगता है, फिर मैं किसी और को प्रमोट करती हूँ तो उसे भी लगता है कि अरे इतने दिन तक मैं घर क्यों बैठी। सो इट इज़ नाइस टू प्रमोट and give back to the society. That's my motto anyway. Yes. It is completely a different scenario, isn't it? She's doing physical work and you are doing online work. So, do you think it is simple or it is more challenging now these days? That's a really difficult question. You put me on the spot. I think it's difficult. Obviously, there's a number difference. So we have like 75,000 women, yes, yeah, to manage, and we do it as a team. But I think what the easy part for me is that when they have issues like fertility, domestic violence, issues with their husband, their in-laws, their family, the other women help each other a lot. Yes, yes. And so it's less difficult for me because they're such a nice community. They just advise each other and point each other in the right direction. We have a lot of experts in the community as well, so it does help. And touch wood, mashallah, don't have like a lot of conflict in the community as well, because I think that the nature of something like that is that they're there to help each other and to help each other grow and advise each other. So I mean, it's not difficult. I think strategically, it needs thought. You can't just, it's not easy to just like put something on like that and expect it all to run. It needs thought and it needs direction. So I think that's where my kind of expertise come in. And garnering support from the wider community is really important. But I think I've also been very lucky and very blessed in a lot of what we've done, and the people around me, the people that help us cheer, and I'm sure that you must have the same. Somehow you attract the right things and the right people to you. Things just fall into place. Like with Hey Gorgeous, that's a physical, in-person, huge show. There's 7,500 people come to see it. We have 100 exhibitors,
all entrepreneurs, all small businesses. We help them, we train them, we give them workshops. We really are very hands-on, and that takes a lot of work in that physical space to really connect with people. And I think that's what we want to do. We want to connect, and we want to nurture and grow them so that they, inshallah, don't have to come back to us, and they have like a successful business without us. Right. You are a role model. Who is your role model? Oh gosh. Obviously my mum is a big role model for me, because she came to England when she was very young. She was by herself. She came here for treatment. All her family were in East Africa, and she has forged ahead a path for all of us. And both her and my dad have actually came from Tanzania, and they settled here. And I think all of that generation are all inspiring, because they really worked hard to get us where we are today, and definitely. they put a lot of emphasis on education and assimilation into the community, and their work ethic and everything that they do. I think there's so much that our generation and the next generation take for granted about how hard it was to transition into this country. And while they weren't with us a lot physically, they were doing everything for us. I feel like every step of the way that our parents took was in order to create a life for us, even if they weren't physically there, and they worked really hard. So I have to say that my parents and that whole generation are the people that are inspiring, and I think it's up to us and the next generation to make sure that hard work and the hard work that you do. So I was going to interrupt there, because you are doing online. मैं देख रही हूँ कि when you are in person, like Hey Gorgeous for example, you're dealing with so many things. एक सीधी बात नहीं है, अच्छा ये प्रोग्राम किया, ये किया, बुकिंग किया, लोग आ गए, लेकिन there is so much going on. उसी तरह ये जो ऑनलाइन है उसमें हमारे में यही फर्क है, क्योंकि हम जब भी मिलते हैं लोगों को तो पर्सन में मिलते हैं. आज जब कोई भी आया अंदर तो उसका मूड कैसा है, उसको देख के पता चल जाता है कि there is something wrong, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें चलती होती है, और आइसोलेशन तो मैं देख रही हूँ इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अब देखना विंटर टाइम आ रहा है, पीपल विल बी सो आइसोलेटेड. तो दिस इज वाई जो भी आप करें, आप अकेले नहीं हैं. मैं हमेशा कहती हूँ घर के बाहर निकल के 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको टाइम मिले आप वॉक के लिए जाओ. वो जो मैं वॉकिंग कराती हूँ लोगों को, वो हेयर काउंसिल से स्पॉन्सर की चीज़ है. हम सब वॉलंटियर्स है, तो हर थर्सडे हम मिलते हैं 10 बजे, वो पिनर में जो वॉक होती है. लेकिन इफ़ यू गूगल, आप कोई भी बरो में रहते हैं इंग्लैंड में, जस्ट गूगल लोकल वॉक्स, तो उसमें हो जाता है कि यू आर वॉकिंग. तो आई विल एनकरेज कि भाई आप भी आओ, आप वॉक लीडर बनो. वॉक करने के बाद यू मीट पीपल, मीटने के बाद यानी आपकी दोस्ती होती है, आप उनके साथ चलो, बातें करते करते आप 1 घंटा चल के आओ, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और आपको लगेगा अच्छा हुआ मैं बाहर निकली. तो नारी के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. ये वॉक्स है ना, सुबह में होती है, आफ्टरनून में नहीं होती. ब्रेकफास्ट किया, सब स्कूल में चले गए, जहाँ भी जाना चले गए, आप आ जाइए और ज्वाइन कीजिए. ये वॉक इतनी अच्छी है कि मैं जितना भी आपको बताऊं कम होगा, क्योंकि कोविड से पहले 70-80 पीपल यूज्ड टू जॉइन अस ऑन अ वॉक. धीरे धीरे हमारे एशियन भी ज्वाइन होने लगे, तो अच्छा लगता है कि चलो आप भी आ जाते हैं. और बात करते करते आप जो टाइम पास कर देते हैं, घर जाके आई बिलीव मी आप में एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को मिले, हंसे, खुली हवा में आप चले हैं. तो आई वुड प्रमोट दैट. और मुझे लगता है कि हम एशियन वीमेन में हम जो करते हैं लेडीज़ को प्रमोट करने के लिए, हम हेल्थ प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, क्योंकि ये डायबिटीज़ है, कोई भी आपकी मेडिकल कंडीशन है, या अब अंधेरा आ रहा है, तो हम पुलिस को बुलाएंगे कि हाउ टू बी सेफ. लेडीज़ को अपने अकेलेपन में दरवाज़ा कैसे बंद करना है, लाइट कहाँ रखनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा भी टाइम आपको जो मिले ना, थोड़ा भी वॉलंटरी काम आपको करना हो आप करें, क्योंकि आपको सेल्फ एक्चुअली जो आपके अंदर जो है
एनर्जी वो बाहर आएगी, आपको वर्थ लगेगा कि अच्छा मैंने भी कुछ किया है। वरना हम घर बैठे तो जो भी करना है करते रहते हैं, लेकिन आई वुड रियली प्रमोट वॉलंटियरिंग। Okay, Zamia, how you manage this big group? Is there any conflict or you feel any challenges to manage all these things? No, I feel like I said it, like it's self-managing. We have great members, so I have a great team as well, and they keep an eye on the groups, they keep an eye on the posts, they raise things, and people report stuff. So actually, it's not a big job, but like I said, the important thing is for us to constantly, help the small businesses and help signpost people into the right direction. And we have one of our team members, Seema, who has worked with the council in the domestic violence scenario, and she really helps signpost people to doing the right thing and getting on the right path. We don't give any actual legal advice or anything, but we can signpost people to be able to kind of help them and their lives. And like I said, the experts, we can signpost to them. So we have such a big range of experts and things that people can do in order to help themselves and live the life they want to live, get out of bad situations, improve their mental health, help with their children and their education. And there's a lot of the ADHD and autism at the moment. We have experts to help for that. So it's really a resource which is international now, and you can actually get any help that you need in the right place. वर्षा जी, मैं अब आपके पास आती हूँ क्योंकि एशियन कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है एंड काफ़ी सारे मेंबर्स जो हैं पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? जैसे कमला हैरिस ने अभी यूएस में इलेक्शन लड़ा और फिर यहाँ पर ऋषि सुनाक भी आए थे, पीएम बने थे, उसको आप कैसे देखती हैं? कैसे पॉलिटिकली कितना स्ट्रांग हैं हम? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि नारी शक्ति, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमारे में है। हमारी बहुत सारी काउंसिलर्स जो हैरो में है या इंग्लैंड में है, वीमेन बहुत सारे हैं, तो उनको वो हमें प्रमोट करें, हम उन्हें प्रमोट करें। हर वक्त इलेक्शन के, लोकल इलेक्शन या सेंट्रल इलेक्शन के पहले मैं हमेशा पार्टीज को इनवाइट करती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि वीमेन आके वहाँ बोले। सच बात यह है कि हमारी लेडीज़ यानी एशियन लेडीज़ वोटिंग के लिए थोड़ी पीछे रह जाती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप वोट करें, आपके जो भी विचार है आप उन्हें एक्सप्रेस करें। हो जाता है कि समटाइम्स इतने साल के बाद यू फॉरगॉटन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन एज वी गेट ओल्डर, फॉर एग्जांपल हमें ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होती थी, यानी हमारी लेडीज़ जो बस में आती थी उन्हें स्कूल के वक्त 3:30-4 बजे हैरेसमेंट होती थी, बच्चे आ जाते थे, तो पुलिस को बुलाया, हमने काउंसलर को बुलाया, आके उन्होंने जिस तरह हमें समझाया, तो लगता है कि वी हैव टू बी क्वाइट फोर फ्रंट इन एक्सप्रेसिंग आवर प्रॉब्लम्स। हम लोग बोलते नहीं हैं और बोलने के बाद हमें लगता है कौन सुनेगा। मैं कहती हूँ तुम्हें कि पुलिस आते हैं, जब उनके साथ बातें होती हैं तो दे डू टेक केयर। स्पेशली मैं कहती हूँ कि ट्रांसपोर्ट में जो भी प्रॉब्लम होती है या आपको रात को कोई प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं किससे बात करूँ, वहाँ वीमेन पुलिस ऑफिसर्स भी है जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आई वुड से कि जहाँ भी चांस मिले स्पीक अप, सपोर्ट ईच अदर एंड बी फर्म कि भाई नहीं कोई कहेगा ये पार्टी को वोट करो वो पार्टी को नहीं, लिसन टू एवरीवन एंड देन डिसाइड किसको वोट करना है। पर मैं हमेशा वुमेन को प्रमोट करूंगी। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Your favorite channel MATV on Sky 711 is now moved to Sky 709. MATV is committed to entertain you and your family. So remember, Sky 709 is your channel of choice, MATV. Where to begin? I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder that I'll always remember.
हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी एमए टीवी जरूर देखते हैं। दे माइट बी योर फ्यूचर कस्टमर्स, but you have to tell them about your products and services. Let's grow your business with MATV. Advertise, promote and market your product and services on MATV. Call MATV Sales on 07970 337036 or 0208 795 0026. वेलकम बैक। मैं बात कर रही थी वर्षा जी से और वर्षा जी ने हमें बताया कि किस तरीके से हम अपने आप को फ्रंट में ला सकते हैं, अपनी बातें सामने रख सकते हैं। वर्षा जी, मैं फिर से लौटती हूँ आपके पास में। आप जैसे बता रही थी कि अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप उसको सामने लाइए, आप उसमें आप चुप मत बैठिए। तो जैसे ज़मीहा, बैक टू यू, व्हाट डू यू थिंक, शुड वी लीव दैट वन और वी नीड टू कम इन फ्रंट अबाउट दैट? What is your point of view? Like, if नहीं, मैं I think I get the point, क्योंकि हमारी लेडीज यानी मेरी उम्र की मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं मेरे जैसे है जो हमेशा पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन जो एल्डरली वीमेन है उन्हें लगता है कि जो हो रहा है वो होने दो, या बच्चे जो कहते हैं वो पार्टी को सपोर्ट करो। मुझे लगता है कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है एक दूसरे से बांटने से 2 से 4, 4 से 6 होते हैं ना, वो इस ज़्यादा होता है। एंड जैसे कि आपके नेबरहुड में कहीं बिल्डिंग कोई प्लानिंग हो रही है, वहाँ फ्लैट्स आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? नहीं ना। तो आप 4-5 थोड़े इकट्ठे होके यू विल गो टू काउंसिल एंड से कि भाई ये हमारे एरिया में हमें नहीं चाहिए। उसी तरह और भी कोई पॉलिटिकल चीज़ है जो जैसे रिसेंटली हुआ था, आप देखे होंगे कि रोड वर्क्स बिल्कुल नहीं हो रहे, तो आप पिटिशन करें कि भाई हमारे एरिया में रोड्स बहुत खराब है, यहाँ बुजुर्ग लोग भी रहते हैं। आप नहीं बोलेंगे तो वो रोड्स आपके ठीक नहीं होने वाला है। उसी तरह लाइफ में जो भी आपके यहाँ मुश्किलें आ रही है, आप नहीं बोलेंगे तो उसका कोई इलाज तो नहीं है ना अपने आप, तो आपको बोलना पड़ता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ 2 से 4, 4 से 6 नारी इकट्ठी हो गई ना, सब हो सकता है। Samiha, we are politically strong. We are all around the world now. You know about Rishi Sunak and Kamala Harris. What is your point of view? So politically, it depends on everybody's agenda, doesn't it? I mean, what's important to us might not be important to the next person. So, you know, if they're supporting things on a personal level, if they're supporting things that I believe in, like with Palestine and stuff, then that's good. But they don't always do that. I think not just in politics, but I think Asians are definitely more visible in the global community with actresses. I mean, look at how amazing like Diljit did recently, and obviously like the films and everything that some of the actors are in. They're becoming more visible. Models are being invited to things, and I think just generally, now that we're more visible globally, we have to use our voices. So whether it's on a political stage or whether it's just on a world stage or a social media stage, we have to put our point of view across, and then we can influence so much more, because at the end of the day, politicians should be working for the people. Exactly. Not that they do necessarily, but the point is that they're elected or they're in power to help with the people. So the louder our voices are, the more we take a stand against things, then the more hopefully they'll listen. So while it's good that there's a representation in Parliament, they also have to listen to the people. Yes. What challenges you have faced in your life? I won't say challenges, luckily, क्योंकि बचपन से ही मैं हमेशा पता नहीं क्यों मुझे पहले से ही पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट था, डांसिंग या सिंगिंग जो भी हो। लेकिन होता है कभी कभी कि आपकी लाइफ में कोई आपके बीच में आ जाए या आपको काम ना करने दे। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं जितना भी वॉलंटरी काम करती हूँ वो मेरे लिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। लेकिन जनरली आप देखेंगे कि मेन डोंट थिंक दैट वे। सो
जो भी आपको करना है, हमेशा कहते कि नहीं तेरा तो काम घर में है, तुझे ये करना है वो करना है। और मुझे लगता है कि मेन में वो इंक्लिनेशन है ही नहीं कि चलो हम भी कुछ करें। मैं सब मेन के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रन बाय मेन एंड वीमेन टुगेदर। और जहाँ जहाँ नारी है वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ काम अच्छी तरह होता है, क्योंकि यू आर नॉट शाय, आप अकेले हैं, सारी विमेन है, तो आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं बनता है कि चलो मुझे थोड़ी मैनर्स रखनी पड़ेगी या कुछ मैं नहीं बोल सकती। तो विमेन के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप बाहर निकले। चैलेंजेस मैं ये कहूँगी कि जब नए आते हैं देश में तब जो चैलेंजेस थी वो अब नहीं है, लेकिन आज भी पॉलिटिकली या अदरवाइज आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा, और यू हैव टू हैव यूनाइटेड सपोर्ट। जैसे ये मैं यहाँ बैठी हूँ, वो भी एक अजीब की बात है, वो सब विमेन ने मिल के किया है, अदरवाइज ये नहीं होता। तो एक दूसरे को प्रमोट करना, और किसी को चैलेंज आ गई ना, आप वहाँ रहे, बी देयर फॉर हर, और कहे कि डोंट वरी आई एम विथ यू। तो हमें जो आगे बढ़ना है या लाइफ में अचीव करना है वो थोड़ा इजी बन जाता है। मैं मानती हूँ कि वी हैव टू बी देयर फॉर ईच अदर। और मेंटल हेल्थ, मैं हमेशा कहती हूँ मेंटल हेल्थ विमेन के लिए बड़ी चैलेंज की बात है। आपके फैमिली में भी जो नहीं समझेगा वो आपको पागल कहेगा। तो आपको बाहर निकलना है, कम आउट ऑफ योर आइसोलेशन, कम आउट ऑफ योर शेल। और जो बाहर जाके आप कर सकते हैं, मैं गारंटी देती हूँ आप भी कहेंगे अच्छा हुआ मैंने ये थोड़ा बाहर निकल के काम किया। Yeah. What challenges you have faced, Samiha? I think every woman faces a lot of challenges on a day-to-day basis, and life is hard. Generally, life is hard for everybody. You know, economically, socially, personally, mentally. Everybody has so many problems. I mean, my biggest challenge for me is 2 years ago I lost my husband, and it was a shock. It was really hard, and trying to adjust to a life with somebody that was such a big part of your life on an everyday basis was really difficult. And I think when you're in the public eye as well, there's lots of people looking to you. You have to carry on, and you have to tell people how you're feeling. And so actually that was quite cathartic for me, that I shared a lot of what I was going through on a personal and emotional level. But actually there's so many people that have lost loved ones, and the grieving process is really difficult. But the other thing that's really difficult, which we don't talk about enough, is the financial and the wills and the legal side of everything. And that hit me really hard because I wasn't expecting it. And going through everything that you're going through as a person emotionally, having to deal with stuff on top of that was hard. And I think one of the messages after Sham passed away that I had was, you know, get your ducks in a row. Make sure you and your husband know what your investments are, what your liabilities are, what your will says, what your insurances are, where things are kept, who owns what in what country. Yes. You know, is everything aligned? And I think, you know, unfortunately, death is one of the things that we're all going to have to experience, right? Death and taxes are the only certainties. If you're born, you're going to die. If you're born, then if they're born, then the people around you at some point, they might outlive you, they might not. But how much do you really know about what happens after they've gone? And it's a really difficult, horrible conversation. And I have to say, I did, like, Sham wasn't very well, so I did try and tackle it a couple of times, but it feels insensitive, or it's not the right time to talk about it. But boy, do I wish I had. And whether the time is right or not, or no matter how, it's never a good time. You have to know where your family is, where they stand, what will happen. If you both go, what would happen to the kids, because they don't just go to the grandparents or the aunt. You have to put everything in your will, and you have to have really uncomfortable, difficult conversations and put everything down on paper that you need to put down. And I think that the challenge
of the grief, and the loss is always going to be there. But you know what? If you can do everything else around your life so that you don't have to think about that, that is hard. So that's my learning from probably my biggest challenge that I've ever had to go through. So can you imagine, जैसे you have the language, English, you have the know-how about media. Those women who came and had no language skill, can you imagine? कि उनके लिए मुझे तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं कि जहाँ हस्बैंड ने कहा वाइफ को कि डोंट वरी, मैं हूँ ना, और वो मैं हूँ ना करते करते चले गए. उनके एक तो जो भी पेपर वर्क है वो उन्हें पता नहीं है, इंग्लिश नहीं आती है, और किसके नाम पर विल किया है वो भी नहीं पता है, बेटी के नाम, बेटे के नाम या किसी और के नाम, वो भी नहीं पता है. तो लैंग्वेज के यहाँ जो बुजुर्ग की मैं बात करती हूँ, बहुत सारी ऐसी लेडीज है उन्हें कुछ भी नहीं पता, घर किसके नाम है वो नहीं पता, मॉर्गेज गई है कि नहीं वो नहीं पता, बिल कितना है ये भी नहीं पता. तो वो हमारे में ये यंगर जनरेशन से थोड़ा अलग है, लेकिन पता भी नहीं है कि हम कितने पैसे भरते हैं, मेरी बैंक बैलेंस में क्या है वो भी नहीं पता. तो वो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने भी शायद थोड़ा उस टाइम पर देख लिया कि भाई चलो माँ को कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस हमारे में होनी ही चाहिए. इसीलिए मैं जब भी प्रमोट करती हूँ कुछ किसी को भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मैं हमेशा कहती हूँ विल्स एंड ट्रस्ट, यानी आपके नाम पर वसीयतनामा होना ही चाहिए. तो हम बुलाते हैं किसी को जो हमें समझाते हैं, गुजराती में हिंदी में समझाते हैं कि भाई ये वसीयतनामा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका हस्बैंड, बच्चे, कोई भी जा सकता है, या आप चले गए, आपके पीछे क्या होने वाला है. ये वसीयतनामा भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मैं हर नारी को कहूँगी कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, यंग है या ओल्ड है, प्लीज़ आपको ये सब फाइनेंस का पता होना चाहिए. नहीं पता है तो आपकी लैंग्वेज में लिखवा दीजिए, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, पंजाबी में, जो भी हो, लिखवा के आपको पता होना चाहिए कि आपके बारे में क्या लिखा है, आपके पीछे या आगे कौन है, किसके नाम सारा वसीयत लिखा हुआ है. क्योंकि कभी कभी ये बैटल बन जाती है, तो इल फीलिंग हो जाती है बच्चों में भी, लेकिन पहले से ही लिखा हुआ है कि क्या हो रहा है, इट बिकम्स वेरी इजी. तो आई वुड से कि नारी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है, बट हो जाता है. ये देश में थोड़ा इजी है क्योंकि सारी चीज़ें लीगली होती है, आपके पीछे कोई नहीं कुछ कर सकता. Samir, you have that group, the professional people can connect with you. So what kind of challenges you can face there if someone is struggling with, it is women's based or any Asian can join there? It's not even any Asian. Technically, anybody can join. We don't cut anybody out. But right. I think the point of professional Asian, there's almost 95,000 members, and they provide all kinds of products and services for your Asian lifestyle. So it's open to anybody, because we have people that might want to go to, like, say a wedding and they don't know what to wear, so they'll join. Okay. They might want to know, like, a caterer for an Indian event, or they might want to have their hair and makeup done, or find a personal trainer, or look for wills and those kind of legal documents and stuff. So I think there's no kind of challenge for me around, these people obviously have a platform to be able to talk about their goods and their services and reach people. I think the challenge for me is around really letting people let us help you. Mm-hmm. I think that's you think as a business owner you can't do everything, because you're in charge of your accounts and your marketing and your PR, and when you're a small business you have to really do everything yourself, and you have a product that you love and that you're passionate about, but obviously if nobody knows about it, if your accountant can't do all the right billing and everything for it, if there's so many things that you have to think about and balance, but your passion is just there for your business. So we're really trying to help
on all the other things around it, because we appreciate that people know their trade, they're skilled, they've learnt for years, they've invested their time, their money, their effort into honing a skill and learning about things. So I think all the other things that come around it, that's what we're also here to help you with. So we have so many people giving such great advice to businesses, and I think it's great. I think it's great that there are so many small businesses that Asian women particularly have just got insanely good products and services, and they're passionate and they're engaging and they're just so amazing. And it's like, honestly my honor to showcase people like that at Hey Gorgeous and to showcase them on the platform. But I just want everyone to level up and make some real money from what they're doing, because honestly so many people are so fantastic. So is your service user friendly? So जैसे मैंने पहले कहा कि people have language issue, so would you provide service in their language if they can't understand? जैसे आपने कहा कि एक दूसरे को help करनी है, लेकिन there will be people like to join but have no English. No, we have a team, and they speak all Gujarati and Hindi amongst them, and Punjabi, and so they do help in any way that they can. So yeah, I mean, that would be वर्षा जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि मेरा जो ग्रुप है वो 300 लिमिट है हमारी, एंड 200 लोग जो हैं वो आपके लिए अभी भी वेट कर रहे हैं. अगर सच में किसी को ज़रूरत है तो फिर क्या वो कैसे, किस जगह जाएं, कहाँ, किससे बात करें, कैसे कम्युनिकेट करें अपनी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती हैं चीज़ें. एशियंस अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो किन के पास जा सकते हैं, कैसे वो अपने आप को. जनरली क्या होता है कि एक दूसरे से पता चलता है कि अच्छा यहाँ एक ग्रुप है जो स्पेशली वीमेन के लिए है. इफ़ दे टर्न अप ऑन आवर डोर स्टेप, वी वेलकम देम, क्योंकि वी डोंट डू एडवर्टाइज, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है. पहली बात तो यही है कि जब हम इवेंट्स करते हैं 300-400 पीपल कैन ज्वाइन, लेकिन जो हम थर्सडे मिलते हैं, हर थर्सडे हम नॉर्थ हैरो मेथोडिस्ट चर्च में मिलते हैं. ऐसा हुआ है कभी कभी कि किसी ने सुना है तो बेटी माँ को ले आएगी कि मेरी माँ बहुत डिप्रेशन में है क्योंकि अभी रिसेंटली वी लॉस्ट फादर. तो हम हमेशा उन्हें वेलकम करते हैं. उन्हें इसी तरह हम maybe we charge a little bit 2 pounds more than our normal membership, लेकिन वो वहाँ आते हैं, हम किसी को मना नहीं करते क्योंकि मेंबरशिप नहीं दे सकते, लेकिन वहाँ आने से हम मना नहीं करते क्योंकि इट इज़ फॉर वीमेन. सो इफ़ वी डोंट सपोर्ट ईच अदर तो और कौन करेगा. तो हम कभी मना तो नहीं करते, लेकिन हम एडवर्टाइज नहीं करते क्योंकि हमें जगह की बहुत प्रॉब्लम है. और हम वॉलंटियर्स हैं, 15 वॉलंटियर्स जो इन सब का ख्याल रखते हैं. एवरी वीक वी ट्राई एंड ब्रिंग आउट अ सब्जेक्ट दैट इज़ क्लोज टू देयर हार्ट. वी विल आस्क कि भाई आपको किस बात की जानकारी चाहिए, तो हम उस तरह हम प्रमोट करते हैं, इन्हें गेस्ट को इनवाइट करते हैं. जैसे आपने कहा कि आप भी लैंग्वेजेस के करते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम. एक बार आके हमारे मेंबर्स को बताएं कि आप क्या प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि थोड़े शाय भी है और थोड़ी अनजान भी है, क्योंकि यहाँ रह इतने सालों से है, कितने सिंस 72 मेनी वीमेन वर केप्ट टोटली हाउस वाइफ. सो अब उनके लिए बाहर आना और सीखना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी विमेन है ना, वो एक दूसरे को साथ दे के हमेशा प्रमोट करती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, तू भी आ जाना. और एक दूसरे को राइट देते हैं कि भी चलो तेरे पास कार नहीं है, ठीक है आज मैं तुझे ले जाऊँगी. तो ये भी होता है कि नहीं, जैसे दिवाली टाइम है, नवरात्रि टाइम है, वी प्रमोट, आ जाओ और साथ में आके मनाएं. Yeah, so now these days migration is very common, and not only for Asians, worldwide it is. So what is the future, do you think? I mean, for me, because social media is so prevalent, that global reach is so much easier. So whether you're, migrating or immigrating or going out of this country or coming into this country, it's so easy to keep in touch with people. So, and just from basic as WhatsApp. And WhatsApp groups, they're incredible because you're in touch with your family from overseas. No matter where they are in the world, they can still be in touch with you. Same with Facebook, same with Instagram, same with email, Skype, Zoom, whatever. Technology has made the world so much smaller. It really is a global village. And so I think
if people have opportunities, and the good thing about being able to migrate is to either start something for yourself and create an opportunity in a different country that you wouldn't have, or to help that country and help that landscape and help the people there and allow people to experience your skills and your expertise and make a difference in the lives of other people. So I think it's amazing that we can go from country to country and spread our wisdom and our love and our thoughts and everything, but we can still so easily have a global audience too. Yes, Varsha ji, That's क्या point है? that's the difference कि भाई उस अभी जो भी youngster ज़्यादा, I think the younger people coming into the country and they normally they are quite up to date with the technology. As the problem is with the elderly, that if they are brought here with the family, then it becomes an issue and they are isolated. So I would suggest that those who come here, please look out for your elders as well in the family. They have no language, and I see many coming on holidays here nowadays, and I see them wandering around town, especially during summertime. So they actually are left. Family have brought them here for holiday, but they are working, so the parents are left on their own, and I see them walking around town, and I feel that I think they need to be made aware of the culture here and how we behave, how we travel here, and keep them updated with our community here. There are so many communities, so many organizations. You just have to Google it. Going to your technology again, just Google it and you'll find out there are organizations so they don't have to stay home alone, and support each other. Come out of your isolation. You don't need to suffer in silence. Yes. What do you think? You want to add something? No, I mean, I think it's a privilege, obviously, to be able to have the grandparents come over and spend time with the children and see their children in a different country and be able to absorb the differences. I mean, for me, the differences is what makes it beautiful, that we can have this whole global tapestry, but everyone's culture is different and everyone's scenery is different, and we can go to India and experience it, you know, as a Western person that I am now, and vice versa. And while it's different, I think it should be celebrated. And I think part of what I do is, as these changes happen and you do emigrate, or go different places in the world, that there's a community online that will kind of bring you back to your cultural heritage and help you no matter where you are in the world. So you can go to Professional Asian and ask for eggless cake maker in Toronto, and there will be people that will help you. And so I think when you have communities like this, you definitely kind of take advantage of them, because they open your eyes, they help you, they're there to support you, and you can actually access so much information just from any Facebook community. Inspiring Indian Women, obviously, is one of them. Technology. Yeah, and there's so many, and I think that generationally, like, everybody's on WhatsApp. I don't think it matters how old you are. You can still pretty much have like a WhatsApp conversation or a text conversation with everybody. And the percentage of people that are on WhatsApp is huge. On the same note, we had an event where ladies were shown how to use the phone, because many didn't know, and how to call people or get in touch with in an emergency. But yeah, I mean, technology is there. Yes. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके, और यहाँ पर अब हम लेते हैं विराम। अगले महीने फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।